Jai Hind, dear students. I am Dr. Preeti and today we are going to revise the tissue chapter, and the part that we'll be covering in this video is epithelial tissues. Epithelial tissues are like a covering. When you bring things from the market, you usually bring it in a polythene bag or any other bag to cover up the things. So we want something to cover our body as well. For covering our body, we have the skin, that is a type of epithelial tissue. Apart from that, when you use a dustbin, we commonly place if you are using a dustbin, we commonly use a polythene bag inside it. We place a polythene bag inside that so that our dustbin is not getting weird and torn. It's not made dirty because of the garbage that we put in. इसलिए इसी तरह से हमारी बॉडी में भी इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी एक बॉडी कवरिंग प्रोवाइड करती है, दैट इज ऑल्सो ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज. सो बॉडी के बाहर की कवरिंग दैट इज स्किन, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में भी अंदर की तरफ एक कवरिंग दैट विल ऑल्सो बी फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यूज. फाइन. एपिथेलियल टिश्यूज का काम क्या है? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन. अगर हमारी स्किन नहीं होगी तो ऑल द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स will be directly entering into our body. तो हमारी स्किन क्या काम कर रही है? Protecting us from the external environment. तो सारे epithelial tissues का क्या काम होता है? That is protection. Protection provide करने के लिए अगर cells एक दूसरे से दूर दूर हुए तो protection complete हो जाएगा क्या? No. At places where they are apart from each other, जहां पर gaps हैं, वहां से कोई भी protection lose हो जाएगा and organisms can enter into the body. तो ये सेल्स को कैसा होना पड़ेगा? दे शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द सेल्स एंड दैट इज व्हाई वी से epithelial tissues have no intercellular space. Intercellular space is not there between the cells of epithelium. पास में है सारे cells so that they can provide the required protection. Okay, so protection provide करने के लिए they have to be very close to each other. Cells are close means there is no intercellular space. फाइन. एपिथेलियल टिश्यूज के नीचे कोई भी टिश्यूज हैं तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एपिथेलियल टिश्यूज के बेस पे एक सेल्स की लेयर होती है एंड दैट इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मतलब बेस पर, वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट. तो एपिथेलियल टिश्यूज के बेस पर क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन. फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई एक मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो एपिथेलियल टिश्यूज को बाकी के अंडरलाइंग टिश्यूज से सेपरेट करके रखेगी. ओके. Now, coming to the types of epithelial tissue. First type of epithelial tissue is squamous epithelium. Squamous epithelium is of two types. First is simple squamous epithelium. Now, let's understand what is squamous epithelium. Squamous epithelium मतलब जो cells हैं, they are very flat cells. Thin cells are there. They are the flat cells. इनकी width is more as compared to their height. Height is less and width is more. So they are flat cells. कहां पर requirement होगी इस flat cells की? जहां पर भी हमें बिल्कुल पतली layer चाहिए cells की. We require a very thin layer. That places will be having simple squamous epithelium. ऐसी पतली layer क्यों और कहां चाहिए? Let's see. हम जब breathe करते हैं तो air जाती है lungs के alveoli में. And from the alveoli, that gases like oxygen goes into the bloodstream through blood capillaries. Now, for this easy diffusion of the gases, alveoli and capillaries both should be having a very thin layer. मोटी layer हुई तो gases exchange easily नहीं हो पाएंगी. So, for exchange of gases, we require a very thin layer. पतली सी layer चाहिए हमें. So, that thin layer is of the simple squamous epithelium. That is why alveoli and blood capillaries both have simple squamous epithelium. Easy to learn? Okay. Now, coming to our skin. Skin में भी squamous epithelium है. But wait a minute. अगर single layer of squamous epithelium होगा तो will it work? No. हमने जैसे ही scratch किया अपनी skin को पता चला squamous epithelium is worn out. बहुत पतली layer है, damage हो जाएगी. तो एक single layer से काम नहीं चलेगा. Then we need to have multiple layers. तो इन मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम कैसे अरेंज करते हैं? एक लेयर एंड बिलो दैट विल बी हैविंग अनदर लेयर ऑफ सेल्स. Such multiple layer of squamous epithelium is known as
Stratified squamous epithelium. Stratified means multiple layers. तो skin में, inner lining of mouth में, esophagus में we have stratified squamous epithelium because वहां पर एक single layer won't be providing the protection. It will be easily eroded away. So we don't want that. For example, in our mouth, when we chew the food and swallow the food, after from the mouth, the food goes into the esophagus. Both mouth as well as esophagus requires more protection. क्योंकि फूड बार बार आ रहा है, swallow कर रहे हैं हम, तो अगर हम एक ही squamous epithelium की लेयर होगी तो वो रिमूव हो जाएगी. But we don't want it to be removed. तो वहां पर हमें मल्टीपल लेयर्स चाहिए ताकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो सके. So the skin, inner lining of mouth and inner lining of esophagus, all the three have stratified squamous epithelium. ठीक है, रीजंस आपको याद नहीं करने, you just need to remember the place where stratified squamous epithelium is found. But I am telling you the reason so that you can logically connect them and easily remember them. Intestine में सोचो, अगर squamous epithelium हुआ, बहुत पतली लेयर हुई, तो फूड पास होगा उसमें से तो वो खराब हो जाएगी. मल्टीपल लेयर्स दे दी अगर हमने तो फूड का अब्सॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा. सो अब क्या करें? सो दैट इज व्हाई इंटेस्टाइन इज हैविंग columnar epithelium. What is columnar epithelium? You often draw columns in your copy. Columns means straight lines that divides your page into sections. Similarly, columnar cells जो हैं, you can see that they have more height as compared to their width. ऐसे cells को बोलते हैं columnar epithelium. Wherever there is secretion or absorption involved, वहां पर हमारी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है? That the cells should be thick enough, that should be having more height, so that अगर ये intestine वाला पार्ट है तो intestine में से absorption हो जाए and basement membrane के थ्रू आगे pass on हो जाए. So more height is required. पतले पतले cells होंगे तो damage हो जाएंगे. So we need the cells to be having more height, and for that purpose, places where secretion or absorption is concerned, like small intestine, we have columnar epithelium. ठीक है, columnar epithelium means the cells are having more height as compared to the width. Then comes the upper respiratory tract. Upper respiratory tract is very interesting. Upper respiratory tract में हमें क्या करना है? That if some dust particles are entering, some microorganisms are entering along with the air that we inhale, हमें उसको भी remove करना है. So what is there? In columnar epithelium में respiratory tract में cilia develop हो जाते हैं. Cilia means hair-like structures. Okay, that can move also. तो अगर कोई dust particles enter हो गए along with the air that we inhale, तो ये cilia क्या करेंगे? They will move and they will push these dust particles back out of the nose. तो हमारी respiratory tract में जो epithelium है, that is columnar epithelium, but that is ciliated columnar epithelium. That is there in the upper respiratory tract. Is that clear? Tubules like kidney tubule. Kidney में tubules कहाँ पर होते हैं? Kidney में होते हैं nephrons. Nephron में एक part होता है tubular part. Tube like structure है. Okay? तो kidney tubules हैं. Salivary duct है. Now, इसमें अगर columnar cells हुए तो just imagine पतली सी हमारी duct है, अगर इसमें इतने लंबे लंबे cells हुए, then that will be blocking the pathway only. अब हमें क्या करना है? That need to be having less height. So we have cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium in tube-like structures. Tube-like structures कौन से हैं? Kidney tubules, salivary duct. They will be having cuboidal epithelium. जिनके एक एक cell कैसे हैं? Cube-like shape है. Okay, cubic shape के हैं, and that is why it's known as cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium is present in kidney tubules and salivary duct. Okay, next comes the last one, that is glandular epithelium. Glandular epithelium नाम से ही पता चल रहा है glands में है. Glandular epithelium क्या है? हमारे पास simple epithelium था हमारे पास. We were having an epithelium, but अब ये glands बनाने के लिए क्या हुआ? ये epithelium ही अंदर की तरफ फोल्ड हो गया. ग्लैंड्स फॉर्म करने के लिए हमारा एपिथेलियम के सेल्स क्या हो गए? दब करके अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो गए, एंड दे ओनली फॉर्म द
glandular epithelium. So the epithelium was there that folded itself inside, that modified itself to form the glandular epithelium. Glandular epithelium kahan hoga? In the glands, like in salivary gland or in any of the endocrine glands of the body, or apart from that in the sweat glands in the skin. So sweat glands mein bhi kya hoga? That will be glandular epithelium. Okay, I hope epithelial tissues are a bit more easier for you now. In the next video, we'll see about connective tissues. Okay, that's all for today. Good day, everyone.